Yo, let's go. What the fuck is this? Welcome back to another stream. My name is Pradeep, and here we are back with another live daily analysis. Today is Saturday. Okay, it's Saturday night. We're supposed to chill, we're supposed to have fun, but like here we are back on the fucking grind. Okay, the notification is here that I am live. Let me just share this with the community members, everyone, and we'll just start trading immediately. Okay. Yes, everything is right. Everything is all right. I was out. That's why I'm wearing this. I was out. There's some event. Okay. Copy link. And how I'm gonna do this? Uh, okay. Yep. I'll share the link. Just hold on for a second. Okay. Yo boys, just hold on for a second. मैं थोड़ा link share कर रहा हूँ, and then we'll start. So BTC is looking nice. ठीक है. There is a 15-minute FEG that I have marked, and the reason is that I came live. That like I was not supposed to come live today, right? Come live now. But the movement is so good and the position is so good that I had to come live and trade this. Okay, with you all. ठीक है. यहाँ पर okay, यूरो. ठीक है. Cool. Nothing live. ठीक है. आगे फोकस करते हैं. पहली चीज़ तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आज ये होने वाली है कि बीटीसी का ओवरऑल व्यू क्या है. ठीक है. फर्स्ट थिंग इज़ दैट वी गोना चेक कि बीटीसी किस तरीके से आज मूव कर रहा है एंड व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन दैट वी हैव फ्रॉम बीटीसी. ठीक है. एंड तुमको एक चीज़ बता दूँ मैं पहले. ठीक है. कि जब तुम बीटीसी की बात करते हो देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जब मार्केट क्लोज होता है राइट, बट हमेशा रात में मूवमेंट्स डेफिनेटली आते हैं. ओके. देर इज़ अ 1 आवर फेयर वैली गैप. ठीक है. ऊपर के साइड देर इज़ 1 आवर फेयर वैली गैप. दैट इज़ लाइक दिस लाइक इन्वर्स फेयर वैली गैप. राइट. आई डेफिनेटली वांट कि मार्केट उस लेवल पे जाए एंड उस लेवल पे जाके एक बार ट्रेड इन करे उसमें. ठीक है. एंड देन विल बी एबल टू सी सम गुड मूव्स फ्रॉम दैट एरिया. सेकेंड थिंग आई वॉन्ट इज़ दैट कि जैसे ही जो 1 आवर का फेयर वैली गैप है राइट, जिसको अभी मार्केट ने टैप इन किया है, नॉट 1 आवर, माई बैड, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम जो फेयर वैली गैप है राइट. आई फील लाइक कि यहाँ से मोस्टली रिवर्सल होगा. मार्केट रिवर्स करेगा. अगर यहाँ से कम्प्लीटली अगर रिवर्स करता है देन दैट इज़ अनदर अ गुड न्यूज़ फॉर अस. ठीक है. व्हाट इज़ द कंडीशन राइट नाउ? मार्केट कंडीशन अगर तुम देख पा रहे होंगे यहाँ पर डेफिनेटली एक रिवर्सल तुमको देखने को मिल रहा होगा, बट मार्केट इज स्टिल ट्रेडिंग इनटू दैट फेयर वैली गैप. ठीक है. दैट फेयर वैली गैप उसमें अभी तक मार्केट ट्रेड कर रहा है. सो वी हैव टू वेट कि ये जो कंडीशन है यहाँ पर राइट, ये वाला जो फेयर वैली गैप है, यहाँ से अगर मार्केट अगर बाउंस करता है देन वी हैव सम गुड अपॉर्चुनिटी जहाँ से हम अच्छा खासा बाय कर सकते हैं बीटीसी में आज. ठीक है. तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल. अगर तुम इतना टाइम फ्रेम की अगर देखोगे, ये वाला जो इतना टाइम फ्रेम है इसकी अगर तुम बात करोगे, इट इज़ अ वेरी गुड सेटअप. ठीक है. इट्स क्रिएटिंग अ गुड डब्ल्यू एंड दैट इज़ अ वेरी गुड सेटअप दैट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ. ठीक है. BTC इज़ फॉलिंग एंड लेट इट फॉल थोड़ा टाइम के लिए और हम वेट करेंगे. जैसे ही BTC थोड़ा होल्ड करता है राइट अपनी पोजीशंस, उसके बाद हम कुछ नया ट्राई करने की सोच सकते हैं. अभी फ़िलहाल थोड़ा चिल करो. वेर आर द पीपल डूड? कहाँ है लोग? सारे लोग फटाफट ज्वाइन कर लो जितने भी लोग हैं. आई होप तुमको नोटिफिकेशन आया होगा एंड मैं इसलिए तुमको बोल रहा हूँ कि हमेशा नोटिफिकेशन टर्न ऑन किया करो, क्योंकि जैसे ही मैं लाइव आता हूँ देन तुम लोगों को पता चल जाएगा दैट आई एम लाइव. समझ रहे हो? दैट इज़ द ओनली मोटो कि जब मैं बोलता हूँ कि टर्न ऑन द नोटिफिकेशन. कूल. थोड़ा और जूम इन कर लिया मैंने. एक बार मैं चेक कर लेता हूँ पोजीशन.
कूल, ठीक है, सब सॉर्ट है। आज सैटरडे है, डेफिनेटली बहुत सारे लोग मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट जो लोग हैं थोड़े जो फोकस करते हैं मार्केट पे, आई एम प्रीटी श्योर कि वो लोग डेफिनेटली आएंगे एंड देन विल ट्रेड। नाइस, यहाँ से एक रिजेक्शन तुमको देखने को मिलेगा वेरी मच सून। अगर यहाँ से एक रिजेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है, यूट्यूब प्रॉफिट, जस्ट अ सेकेंड, ओके। वेलकम 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 वेलकम। तेरा मेरा अफसाना, नो नो नो, आई कैंट सिंग। अभी अनम्यूट। डोंट टेल मी तुम सारे लोग के भाग गए क्या? आज कहाँ चले गए तुम सारे लोग? इज एवरीथिंग ऑल राइट? 5 व्यूज, वेर बैक वेर बैक वेर बैक। ठीक है, चलो। जस्ट सेकेंड। ठीक है, अच्छा खासा मोमेंटम आ रहा है। द ओनली थिंग इज़ दैट वी नीड टू वेट कि अगर वहाँ से अगर एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट अगर देखने को मिलेगा 15 मिनट कैंडल पे, then that is a very good thing. Swing low is there. Definitely there is a lot of liquidity to the before below the support, and we have to wait कि अगर मार्केट वो वाला सपोर्ट लेता है, that is a good sign for us, ठीक है। यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, बहुत ही ज़्यादा क्रेजी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है, एंड द रीज़न इज़ आई टेल यू, ठीक है। इट हैज़ रिट्रेस्टेड, इट हैज़ लाइक रिस्पेक्टेड द 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप। अगर 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप पे अगर कोई भी कैंडल अगर रिजेक्ट करता है, दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। आई नीड द बॉडी टू क्लोज अबव दैट फेयर वैल्यू गैप, देन उससे होगा क्या, विल गेट अ कन्फर्मेशन कि चलो ठीक है, मार्केट वांट्स टू गो अप फ्रॉम हियर। अगर यहाँ से ऊपर भी जाना चाहता है, देन डेफिनेटली वी नीड सम सॉर्ट ऑफ कन्फर्मेशंस और ज़्यादा, ताकि हमें कन्फर्म हो जाए कि चलो ठीक है, अब ये इवेंचुअली ऊपर जाना चाहता है, राइट। बट द टी पी इज़ गोना बी द जो भी हमारा यहाँ पर ऑल टाइम हाई है करंट, ये वाला ऑल टाइम हाई रहेगा, ठीक है। लेट्स सी हाउ मच मनी वी कैन मेक ऑन दैट, ठीक है। अगर तुम लोग ट्रेड देख रहे हो, तुम लोग लाइव देख रहे हो, देन दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जस्ट लाइक कॉपी द ट्रेड एंड उसको यूज़ करके या इम्प्लीमेंट करके you can also start trading, or you can also just like make money. It's very simple, no rocket science, ठीक है। just a second। थोड़ा मैंने सेटअप भी आज चेंज किया है, तो आई होप तुमको भी थोड़ा अच्छा लगे। मुझे बताओ जल्दी जल्दी, जो जो लोग देख रहे हैं, सेटअप कैसा लग रहा है? ये सेटअप नहीं, ये वाला सेटअप, ठीक है। मैंने थोड़ा चेंजेस किए, मैं रूम के ऐसे चेंज करके बैठा हूँ आज, बैकग्राउंड थोड़ा अलग है। बट जो भी लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो,
एंड राइट नाउ तुमको सिचुएशन बता दूं मैं बीटीसी की बीटीसी में हम एक नेक्स्ट 5 मिनट में एक अच्छा खासा ट्रेड प्लान करेंगे. द रीज़न इज़ वेरी सिंपल. डेफिनेटली दैट 1 hour fair value gap had is been like retested here. एंड यहाँ से अगर रिवर्स मार्केट पूरी तरीके से अगर जाता है, दैट इज़ अ गुड साइन फॉर अस एंड वी कैन बाय फ्रॉम हेयर. द टीपी इज़ गोना बी दिस. ठीक है, वेरी सिंपल ट्रेड, वेरी बेसिक ट्रेड. कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. इट्स अ वेरी बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है, जब बेसिक स्ट्रक्चर की बात आती है देन यू डोंट हैव टू लाइक कॉम्प्लिकेट योर थिंग्स ज़्यादा. जस्ट अ सेकंड गाइस, होल्ड ऑन, चालू रखो. ओके, वी आर बैक. हेलो बॉयज़. तो जैसे मैंने तुमको बोला था, सिंपल यहाँ पे तुमको एक चीज़ का ध्यान रखना है. अगर यहाँ पर एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट तुमको 15 मिनट की कैंडल पे अगर दिख रहा है, दैट इज़ अ गुड साइन दैट वी कैन बाय फ्रॉम हियर. ठीक है, बट एट द सेम टाइम वी डू नॉट हैव एनी कन्फर्मेशन लाइक अ सॉलिड कन्फर्मेशन. ठीक है, आई नीड समथिंग मोर दैन जस्ट फेयर वैली गैप. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. एंड हाँ जी, जस्ट अ सेकेंड. Also about the fit, I was out, तो इसलिए ये वाला आउटफिट था. अभी मैं चेंज करने का मेरे पास टाइम नहीं है. मैं मार्केट को बहुत टाइम से एनालाइज कर रहा हूँ. मैं डेफिनेटली चाहता था कि जो 15 मिनट का जो फेयर वैल्यू मैंने ड्रॉ किया है वो उस लेवल पे मार्केट आए एंड देन वी कैन डू समथिंग फ्रॉम दैट लेवल. ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट दैट यू फील लाइक कि चल ठीक है, एक अच्छा सेटअप है, एक अच्छा ट्रेड हमें यहाँ से डेफिनेटली मिल सकता है. बट तुम्हें ये भी समझना पड़ेगा, अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आओगे तो देर इज़ नो सम सॉर्ट ऑफ कन्फर्मेशन एज ऑफ नाउ. ओके, you need to wait for some more confirmations and then we can go for it. The overall bias today, that is bullish. ठीक है, मार्केट केम डाउन डेफिनेटली 1 hour टाइम फ्रेम पे. देर इज़ लाइक अ लॉट ऑफ रिजेक्शन तुमको देखने को मिलेगा. बहुत सारे सेलर्स को यहाँ पर इन्वाइट किया है एंड डेफिनेटली यहाँ से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाई किया है. ठीक है, अगर तुम ऐसे देखोगे तो एंड सारे लोगों का जो टीपी है वो अराउंड दिस लेवल है. एंड आई सॉरी एसएल जो इस लेवल का है एंड अभी जो लोगों का टीपी है इस लेवल पे है मोस्टली. ठीक है, दिस इज़ द करंट market moving right now. This is the way that market is moving right now currently. Okay, so what we need. Okay, देखो दो चीज़ें हो सकती है, तुम अगर ध्यान में रखोगे. ठीक है, यहाँ से पूरा ही मार्केट इसको रिजेक्ट कर सकता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एंड देन योर दिस इज गोना बी योर नेक्स्ट मूव. ये भी मोस्ट प्रोबेबल है. तुम समझ रहे हो, दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट मूव दैट यू विल हैव. बट ओनली थिंग इज़ दैट there is a fair value gap, so we want market to invalidate that fair value gap and then we can go for something that is new. Cool, chalo. ठीक है, गॉट इट. कितने सेकंड वेट करना है हमें? 15 सेकंड. 40. ठीक है, कूल. 30 सेकंड्स. वी नीड थोड़ा ऊपर रिजेक्शन. वी नीड रिजेक्शन अबाउट दिस एरिया. आई नीड रिजेक्शन एटलीस्ट एट दिस एरिया.
I would say good rejection, but 20 seconds are still there. ठीक है, not bad. Okay, we can buy. I mean, I can buy. Nice doji candle, love that. Wow, did you see that? Did you see that? यहाँ पर मार्केट है, राइट? मार्केट कहाँ पर है? यहाँ पर है, इस लेवल पे. बट हमारा जो टीपी लगा है, सॉरी, जो ट्रेड प्लेस हुआ है वो कहाँ पे हुआ? इस एरिया पे. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल स्लीपेज, ठीक है? एंड स्पेशली एक्शन में इसका बहुत ज़्यादा इशू होता है स्लीपेज का, जितना मैंने नोटिस किया है अभी तक. सो वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जब भी तुम कोई ब्रोकर चूज़ करते हो, मेक श्योर योर ब्रोकर डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ स्लीपेज. इसीलिए तुम माजी फाइनेंस यूज़ कर सकते हो. द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन. जैसे तुम डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहाँ पे जाके तुमको एक लिंक मिल जाएगा माजी फाइनेंस का. वहाँ पर तुम हाँ जी, तो वहाँ पर जाकर तुमको अच्छा खासा ज़ीरो स्प्रेड अकाउंट भी तुमको दिख जाएगा. कूल, चलो. आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट आई हैव सम डिफरेंट प्लान्स विद BTC राइट नाउ, ठीक है? तो थोड़ा होल्ड करते हैं बिकॉज ऑलरेडी BTC थोड़ा अच्छा खासा जंप हो चुका है एंड यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप भी तुमको अच्छा खासा दिख रहा है, राइट? दिस रिजेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, नॉट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर 15 मिनट फेयर वैल्यू यहाँ पे, बट देर आर अदर रीजन्स, ठीक है? सो व्हाट इज़ द करंट पोजिशन राइट नाउ? दिस इज़ आवर करंट पोजिशन. ओके, कूल, चलो. ऑल्सो इफ़ यू नोटिस, अगर इस वाला जो पूरा एरिया है, राइट, देर इज़ नॉट वन फेयर वैल्यू गैप इन दिस एरिया. Market has definitely rejected from this area, but like there has not been one single fair value gap. So what does it really say, right? We have this order block that is resting here. We have this liquidity that is resting at this area. Okay, if market wants to go down, it has to take this kind of liquidity and then it can continue going down, right? And level can be this as well. Okay, so this is the overall path when it comes to the BTC. Cool. जिन लोगों को संडे या सैटरडे, जो अभी मार्केट चल रहा है, राइट, सैटरडे को इफ़ यू वांट टू सी सम काइंड ऑफ गुड मूव्स, आई थिंक ये टाइम बढ़िया होता है 10:30 बजे का. 10:30 बजे के बाद यू ऑलवेज सी सम गुड मूव्स इन BTC. कूल. and I don't know where the fuck people are, like why the fuck they are not like on chat like on Saturday. Like do you guys not want to like make money or what? Do you guys not want to make money? Like you should be on the chat, doesn't matter if it's Saturday. What happened? Like it's Saturday, right? I'm doing live stream. It is a fucking Saturday night. I know you're supposed to go out or do whatever the fuck that is, but like you're supposed to be here, dude. You're supposed to focus on the chat. Unless you're not a fucking millionaire or billionaire. How the fuck you guys are chilling? It's crazy. It's crazy. Also, if you guys wanna, we can react to some, trading videos as well. Meanwhile, just for the fun. And yeah, maybe we can see how it is, Tera mera. Okay, no song, can't really sing songs. But yeah, also like I wanted to tell you, like, have you guys heard about this song? Who am I talking to? Have you guys heard about this song called 100 Bars? If you're not, just go and watch. It's really good.
Don't worry, I can be here the whole night. ठीक है. Only thing that is bothering me that people are not trading on Saturday. What happened? What happened to them? I don't know. We always trade BTC on Saturday. They know that they are supposed to be here. Hi, what's up, Rockstar? ठीक है. They are supposed to be here and they're not, so that's their fault. But yeah, we are trading and we're gonna make money out of this market. Okay, this is one of the trade that we took right now, and इसको हम hold करेंगे. We'll see how it is. The reason is very simple. It's not very complicated. Okay, and yeah, you see this. This is what we call a manipulation. When market creates something like this is one of the like not a very good thing. Okay, when market creates like this. What's up? Thank you so much for joining this live, and yep. Subscribe to the channel if you're new. We do daily live stream on my YouTube and this channel only, and you'll be able to see a lot of it. हाँ जी. 10:45. I feel like at 11 you'll be able to see some good moves in BTC. Okay, you'll be able to see some good moves, and I know there is a lot of manipulation at this area, right? But eventually what we are looking for is a good position, right? I feel this is like a good position that I can place a trade, and I did right. थोड़ा स्लीपेज का इशू हुआ हमारे अकाउंट में एज यूजुअल. आई टेल यू ऑल, अगर अकाउंट चलाना है एक्सएम का, मुझे थोड़ा स्लीपेज के इशू पर्सनली आते हैं एक्सएम में. बट अगर तुम्हें अकाउंट स्टार्ट करना है, ट्रेडिंग स्टार्ट करना है फॉरेक्स में, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन. स्टार्ट विथ माजी फाइनेंस, जीरो स्प्रेड अकाउंट यूल बी एबल टू सी. एंड अगर जीरो स्प्रेड अकाउंट तुमको कोई भी ट्रेडर दे रहा है या कोई भी ब्रोकर दे रहा है, जस्ट टेक इट. ठीक है. मैक्सिमम कमीशन इज़ हाउ मच? मैक्सिमम कमीशन इज़ $7. Maximum commission is $7 and spread is 0. ठीक है. So yes, I've just started trading and don't know about now. Starting just learned about charts and liquidity and what better option trading crypto. Oh, what is better option, trading or crypto trading? So I would suggest, brother. Okay, you see that? You see that move? That's what we do. ठीक है. First thing I would like to tell you that thank you. Like congratulations, like actually starting it, like you started trading and everything. Second thing, start with forex, okay, and also CFDs and all. Start with that. Crypto trading is also nice. The only thing is that be careful when you are depositing money and withdrawing the money. And first thing I would like to say that focus on the price action. Do not get into ISMC, ICT. Basics are always, it works, right? Types of candles, what are the types of patterns, right? Why the patterns, like why market forms certain patterns, why market creates certain candle, उसके reasons, हर एक candle का पीछे का reason क्या होता है, right? ये जानना चालू करो. मार्केट्स को ऑब्जर्व करना चालू करो. सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट किस तरीके से होते हैं, क्यों होते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है. स्पेशली हु रन्स द मार्केट, राइट? जैसे बेसिकली रिटेल ट्रेडर्स होते हैं. रिटेल ट्रेडर्स डोंट नो शिट अबाउट द मार्केट. देन हाउ द पीपल हु आर लाइक इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल, हाउ दे रन and how they start trading, like how they start, like how they trade and everything, right? So that is very important. So understanding the basics, that will help you. Okay, जैसे उसके बाद फिर लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक्स, SMD, EMD, ये सारी चीज़ें तुम एडवांस में आ सकते हो. फोकस ऑन बेसिक प्राइस एक्शन एज ऑफ नाउ. ठीक है. सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बैक टेस्ट करो. सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो पहले तो, राइट? जहाँ जहाँ सारी चीज़ें, वहाँ पे जाके देखो कितनी बार सपोर्ट ब्रेक हुआ है, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, क्या उसके बाद रीटेस्ट हुआ है, या ब्रेकआउट के बाद फेलियर हुआ है, वो फेलियर क्यों हुआ है. एवरी रीज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. दैट इज़ माई सजेशन फॉर यू. एंड ऑल्सो यू कैन वॉच माई यूट्यूब वीडियोज़, दैट इज़ देयर ऑन माई चैनल. एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया मैंने प्राइस एक्शन के ऊपर, बेसिक प्राइस एक्शन एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द फेयर वैल्यू गैप. ठीक है. एक बार वो जाके चेक कर लो. चैनल को सब्सक्राइब करो. एंड ऑल्सो आई एम वर्किंग ऑन अ कोर्स, जो कि उसमें 50 से 60 वीडियोज़ होंगे फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड. सारे जो बिगनर हैं उन लोगों के लिए, ये जिन लोगों को ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता है, वो लोग भी ट्रेडिंग अच्छे से सीख पाएंगे एडवांस लेवल तक. पूरा फ्री में होगा. ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट इट.
एंड अगर अकाउंट की बात है, सबसे ज़्यादा मोस्ट लोग ब्रोकर चूज़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, राइट। जैसे अभी देखो, मैंने अकाउंट में ट्रेड यहाँ पे प्लेस किया था, मेरा ट्रेड यहाँ पर लगा है, यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इसे हम कहते हैं स्लीपेज। तो ऐसे इशू ना हो, जो मैं भी एक्सएम यूज़ कर रहा हूँ, तो लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, दैट इज़ माजी फाइनेंस, न्यू ब्रोकर है, 4-5 साल से वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। एंड आई हैड अ वर्ड विद देम, दे हैव जीरो स्प्रेड अकाउंट एंड कमीशन पर लॉट इज़ ओनली $7। वन ऑफ द बेस्ट अकाउंट दैट यू विल फाइंड। उससे तुम ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज उससे क्या होगा, तुम्हारा स्प्रेड बचेगा, तुम्हारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, एंड कोई भी स्लिपेज का, डिपॉजिट विड्रॉल का इशू भी तुम्हें नहीं आएगा, ठीक है। सो दैट इज़ इट। इफ़ यू वांट एनी सजेशन, एनी क्वेश्चंस, इफ़ यू हैव एनी डाउट, माई इंस्टाग्राम इज़ प्रदीप एक्स ट्रेड्स, जो मेरा यूट्यूब का नाम है, सेम वहाँ पर भी है, जाके फॉलो कर लो। कुछ भी इशू है डीएम कर लो, आई विल हेल्प यू पर्सनली, नो इश्यूज़। कूल, ठीक है, इनफ, दुख गया मेरा मुंह। चलो, नाउ market is moving up, right? And yeah, matter of fact, I just know about forex trading. I don't even know meaning of IST and IST is like Indian Standard Time, like, you know, yeah, yeah, it is like that. You teach me everything about trading from the beginning. I love Mayank channel. I completed his all playlists, and now I don't understand anything about it. Option trading, but he is crypto trading. Okay, don't get into option and all too soon for you. TK, you're just a beginner. Don't get into option and all. Start with basics. Okay, if you want to start with forex, basic, start with pairs. Okay, forex basically is a foreign exchange. Okay, where you trade. Where do we trade? बेसिकली 2-3 जगह होती है जहाँ पे तुम ट्रेड करते हो। एक तो तुम क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, एक तुम इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, या तो तुम फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, ठीक है। फॉरेक्स में तुम कमोडिटीज़ पे भी ट्रेड करते हो, जैसे कमोडिटीज़ हो गया, गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, राइट। सो एंड सॉरी, उसके बाद सिल्वर हो गया, ये सारी कमोडिटीज़ होती है। यू सी दैट हमने ट्रेड लिया था कहाँ से, हाउ इट इज़ गोइंग नाइस, राइट। दैट्स व्हाट वी डू। हाउ मच इज़ द प्रॉफिट राइट नाउ, इट्स $32। You see that? That is how I trade. That is how I daily fucking take trade. Nobody can fuck with me when it comes to trading, dude. I just came. I was waiting. I was waiting for market to come to that area. This is my area of interest, right? And I'm waiting for some good moves right now. On Saturday night, I was supposed to go out, have fun, but what am I doing? I'm trading here. I'm making money. You getting my point? $45 in. Cool. तो बेसिक से स्टार्ट करो। तुम फॉरेक्स में आए हो, फॉरेक्स से स्टार्ट करो। फॉरेक्स में क्या करते हो, तुम करेंसी पेयर्स में ट्रेड करते हो, राइट। करेंसी पेयर्स ये सारी होती है, ये सारी जो है GBP USD, USD JPY, AUD USD, यूरो USD, USD CHF, राइट। ये सारी करेंसी पेयर्स होती है। दो करेंसी पेयर्स को मिला के तुम ट्रेड करते हो। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो वही तुमको करना है। तुम देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, यू सी दैट, यप yep. So I trade in gold and BTC, right, and sometime Ethereum and all, but one of my favorite pair is gold, that is XAUUSD. Second option I would go for GBP, and third option I will go for BTC and USD, ठीक है। All right. That's what I'm saying, brother. Whatever you questions you have, just you need someone to help you, right, in the beginning. Don't get lost. Don't just get lost. Don't listen to hundreds of people. You don't need that. Just listen to someone who you think really you can trust, and just go for it. Okay, it can be whoever. Doesn't really matter. Is it for a good or crypto trading? I can't find any playlist of beginners in your channel. Beginners, I mean, it's like a basic only, where I was explaining everything about the support resistance. I was explaining the price action basically, ठीक है। मैंने ये नहीं बताया कि तुम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। मैंने अज्यूम किया that you guys are trading in forex, and उस हिसाब से मैंने प्लेलिस्ट बनाया था। So I'll show you, just a second.
ठीक है, यहाँ पे जाओगे, ये वाला जो प्ले लिस्ट है, दिस इज लाइक अ बेसिक प्राइस एक्शन, इसको देखोगे तो भी तुमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। एंड एज आई टोल्ड यू, सारी चीज़ें, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, व्हाट इज़ कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक क्या होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, हाउ टू ड्रॉ परफेक्ट ट्रेंड लाइन, इसके ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ब्रेकआउट्स के ऊपर वीडियोज़ है। सो दिस इज लाइक अ बेसिक प्राइस एक्शन, ठीक है। तो ये समझना भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यस, कूल, कुछ इशू है तो पूछ सकते हो, कोई सीन नहीं है। Subscribe to the channel and you'll be able to see a lot of things. 100 videos, dude. 100. I posted 100 videos. You see that? I posted 100 videos. Damn, that is crazy. 100 videos. It's crazy. ठीक है. Nice, sweet rejection. How did that happen? I've turned my $2,000 trading account into 11,000 while live streaming on YouTube. How did that happen? There is no secret. I'm not here to flex. The only thing is that YouTube. How did that happen? There is no secret strategy, honestly. And definitely, I hope you know that I'm not here to flex. The only thing is that every dollar is made in public. Every stop loss, every TP, every mistake, everything was live. And definitely, there is no secret strategy that I'm gonna share with you all. There is nothing like secret strategy. It's just observing the market in the real time and then going for it. You gotta have a plan, you gotta have a setup, and you have to like just execute it. That's it. So if you are someone who really wants to get into Forex in 2026 and maybe change their life completely. Just a second, guys. Okay, that was my guy, my main editor. हम लोग तो कुछ प्लान कर रहे हैं. चलो ठीक है, मेन चीज़ क्या फोकस करनी है अभी फ़िलहाल. ओके, मैं एक चीज़ बताता हूँ तुमको जल्दी जल्दी. अभी जो मार्केट में अभी जो मूवमेंट आ रही है, डेफिनेटली इट्स लाइक ए थोड़ा स्लो मूवमेंट. फ्रॉम वेयर डिड यू स्टार्ट लर्निंग ट्रेडिंग एंड फ्रॉम बुक्स और ऑनलाइन यूट्यूब. सो बेसिकली बुक्स आर वेरी बोरिंग अकॉर्डिंग टू मी, ऑनेस्टली दिस इज लाइक ए जनरल ओपिनियन. बुक्स आर वेरी बोरिंग, सो आई डू नॉट रीड बुक्स ज़्यादा. आई लाइक वॉचिंग. ओके, मेरा विजुअल थोड़ा अच्छा है. So I have started with like watching people like ICT हो गया. There are so many people like they are not from India. Like, you know, I've started watching them, and since that time it's just like watching and applying, watching applying. If I'm like seeing like I'm watching video of like a support and resistance, right? तो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से होता है मैं वो देखूंगा वीडियो में, और सेम टाइप पे मैं अपने चार्ट पे आके उसको अप्लाई करूंगा, राइट? मैं ड्रॉ करूंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सारी चीज़ें.
सो उस तरीके से मैं ट्रेडिंग सीखता था, देखना अप्लाई करना, देखना अप्लाई करना, दैट इज़ माई फंडा, दैट वर्क्स फॉर मी, ठीक है। सो अगर तुम भी उस तरीके के हो, तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड इफ़ यू नीड एनी गाइडेंस यू कैन डायरेक्टली DM मी, प्रदीप एक्स ट्रेड, दैट इज़ माई इंस्टाग्राम ID, नीचे भी उसका मैंने दे दिया, ठीक है। इफ़ यू डोंट माइंड कुड यू रीड ओल्ड मैसेजेस? या मैंने देखा है, लाइक दिस वन राइट, विल टीच यू एवरीथिंग, विल यू टीच मी एवरीथिंग अबाउट इट? Yes, I will teach, no issues. We'll talk about this. Just DM me, ठीक है? Instagram पे DM करो and we'll take it further. Okay, let's go. W trade as of now, ठीक है, going in our direction. As I told you, this is what I wanted and it is happening right now, ठीक है? We have a lot of time pending, no issues, and we'll be able to hit this, or if not, then we'll be able to learn so much from this trade, ठीक है? Eventually the overview is market is gonna go down, but market cannot directly go down. There is a lot of liquidity pending at this area. Market has to take this liquidity and then it can go down, okay? There is a lot of orders at this area, you need to understand that as well, okay? Yeah, Rockstar brother, just DM me, we'll talk about everything in DM, no issues, okay? I'm ready to teach you, nothing, I'm here to teach everybody, and that's how it is. Cool, ठीक है, चलो ठीक है. How we are gonna like, how did I know that market is gonna up from here, right? um, yep, no issues, we'll help you, ठीक है? Just DM me as I mentioned and we'll take you from there, ठीक है? चलो ठीक है, यहाँ पर हमने जैसे मैंने बोला था, it is moving pretty much nicely to our this area, right? This is my interest, this is where I am planning this to take, okay? Right now there is a support at this level, you need to understand, right? Market is taking support, and this candle might break this support, because what's gonna happen at this area, because of the support, it's gonna manipulate a little bit, okay? And another good thing that when market was going up, जब market ऊपर जा रहा था, कोई भी यहाँ पर fair value gap नहीं रहा है, right? So market doesn't have to take, like, come down and take all this fair value gap, so that is also like completely fine. Okay, I'll just go drink water. Just everybody just keep the eye on the trade, okay? And as well as the profit. The profit is here. Cool. Chalo, focus on this. I'll be back in 1 second. We're back. And yes, definitely there is a resistance at that area. थोड़ा और struggle करेगा ऊपर जाने में, but don't worry, eventually it'll go up. No stress, okay? ये वाला जो trade था, it is one of the smartest trade that I've took.
एंड इसका मैं वेट कर रहा था जब मैं मार्केट को मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहा था, आई वाज आउट इन द इवेंट, तब मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था एंड आई वांटेड इट टू कम टू दैट लेवल, द 1 hour fair value gap. I think that is 15-minute fair value gap, I feel like. Yep, that is a 15-minute fair value gap. You see the direction? Okay. This is the current trade. Cool. Just wait for it. I do have that gust to like just say ki what's gonna happen in next. Okay, like I don't care. I don't care about anything. You saw that? You saw that? That's crazy, right? Yep. That's crazy. This is how it is. Okay, this is how we take trades daily. Okay, came, took trades, going in our favor. Love that. Love that. Okay, no complaints. I would say this is gonna be TP1. Okay. It's gonna be TP1. ठीक है? This is gonna be TP2. What do you know about it? What's your opinion about the funded account? It's nice for the beginners. It's nice. Funded account can help you thoda practice, but I feel like mm, mm, go for a nice one, तब जाके प्रॉफिट है. नहीं तो बहुत सारे फंडेड अकाउंट डेली आ रहे मार्केट में. लाइक आई गेट लाइक डेली मैसेजेस कि ओ इसको प्रमोट करो उसको, लाइक ना डूड. Can you talk about the liquidity concept thing? What do you want to know about it? Tell me. Before you ask me anything, make sure you subscribe to the channel, by the way, okay? Make sure you subscribe to the channel and then you ask me questions. Ask me specific questions and I'll answer. Okay? Exactly what you want to know about liquidity. So, अगर तुम्हें ब्रीफ में चाहिए, so liquidity is basically liquidity equals to money. ओके जहाँ पर भी लोग बोलते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, इसका मतलब वहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग है, यहाँ पे बहुत सारा पैसा है, राइट? सो हाउ द मार्केट मूव्स फ्रॉम लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी. ओके, इट कैन बी अ सेल साइड लिक्विडिटी और बाय साइड लिक्विडिटी. समझ रहे हो? जैसे एग्जांपल मान लो, राइट, दिस इज एरिया, it has like a lot of orders, and this is the area that had a lot of orders. You're getting my point? Market is gonna come this, do this, whatever, right? And this is like a liquid area. Gonna come to this level, take all the liquidity pool that is resting here. Gonna come down again. I'm gonna take this liquidity side, and then it's gonna go take this liquidity that is pending here, and then gonna go here and gonna take this liquidity and then gonna go here. समझ रहे हो? So market moves from liquidity to liquidity. You're getting my point? Market goes from liquidity to liquidity. So उस तरीके से market travel करता है. तो अगर किसी ने आपको नेक्स्ट टाइम पूछा कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है और किस तरीके से मूव करता है, किस तरीके से एक्ट करता है, तो मार्केट हमेशा रन्स टू द लिक्विडिटी. समझ रहे हो? लिक्विडिटी से लिक्विडिटी मार्केट हमेशा मूव करता है. सो नाउ यू नीड टू फाइंड आउट वेयर द लिक्विडिटी इज. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? बट ऑल्सो नॉट गेटिंग ट्रैप्ड इन टू दैट लिक्विडिटी, right? You are not the one who is liquidity. You are gonna liquidate that liquidity and then you're gonna take the profit. So understand that. That is also like a very important thing. समझ रहे हो ना? Yes. So that is how market moves.
and there is a buy side liquidity, there is sell side liquidity, and liquidity is mostly above the support and resistance, not necessary, okay. There are some zones that you will be able to find very easily कि हाँ यहाँ पर liquidity है, right, and market will move to that area definitely. जैसे मैंने बोला था कि इस area पे I feel like there is a liquidity, right, so what is gonna happen, market is gonna move to that area. You're getting my point? So liquidity is like a chumbak, so it attracts the market. So that is how it is, and that's how the institutions trade. They do not place order from any random area. जैसे ये जो area है, right, इस एरिया से कोई भी इंस्टीट्यूशंस प्लेस नहीं करेगा. दे विल टेक द मार्केट टू सर्टन लेवल जहाँ पर वो एक्चुअली में उतना ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, जहाँ पर इतने लोग बाहर हो सकते हैं मार्केट से, बिकॉज जितना ज़्यादा बाइंग जब तक नहीं होगा तब तक सेलिंग नहीं होगा, और जब तक सेलिंग नहीं होगा तब तक बाइंग नहीं होगा. सो अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल डिपेंडेंट विथ ईच अदर. समझ रहे हो? नथिंग इज इंडिपेंडेंट एक्सेप्ट एमयूए बनता है. Present screen, how would you explain your present screen to someone who has opened YouTube and seeing this trading with zero knowledge? Okay, so how would I do that? Okay, that's very basic, that's a very good question actually, that's a very good question. Okay, so the people who are new here, who don't know shit about trading, welcome. This is the trading live stream. पहली बात हो, okay. So there are different types of live stream. This is one of the live stream जहाँ पर लोग आके trade करते हैं, okay. What they do, they come live and they trade in front of people. Got it? So some people can take trade, copying. Some people can take trade, okay, just by looking at them. Getting? If I am taking this trade right now, someone can take this trade and make money with me. You're getting my point? So what is the profit right now? The profit is $75. So if this trade goes to win, that it will definitely, right? तो हमारा जो प्रॉफिट होगा डेफिनेटली ही जस्ट लाइक अर्निंग जस्ट लुकिंग एट मी. दिस इज वन ऑफ द लाइव स्ट्रीम दैट आई एम डूइंग. ओके, सेकेंड ऑफ ऑल, ये जो पूरा स्क्रीन दिख रहा है तुमको, ये जो है ये tradingview.com है. tradingview.com इज बेसिकली अ वेबसाइट वेयर यू विल सी चार्ट्स. सो चार्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली चार्ट इज जस्ट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्केट. गॉट इट? सो व्हाट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन? सो दिस इज ऑल चार्ट्स, राइट. इसके पीछे अगर तुम इसको एक्सरे करोगे, ये सारी चीज़ों को, ये जो कैंडल्स को अगर तुम एक्सरे करोगे, इसके पीछे तुमको नंबर्स दिखेंगे. नंबर्स किस चीज़ के दिखेंगे? नंबर्स दिखेंगे ऑर्डर्स के, राइट. कीप हियरिंग लिक्विडिटी स्वीप, सो थैंक्स. या आई गेट इट. सो इसके पीछे अगर तुम इसको स्कैन करोगे तो देयर आर ऑर्डर्स, राइट. यहाँ पर कुछ ऑर्डर्स हैं जो कि कंटिन्यूसली मार्केट लेते जा रहा है, सेल करते जा रहा है, बाय करते जा रहा है, सेल करते जा रहा है, बाय करते जा रहा है. सो दैट इज़ हाउ द एक्सरे लुक्स लाइक, राइट. बट अगर तुम्हें बेसिक चीज़ों से देखा जाए तो ये कैंडल स्टिक है, राइट. आई थिंक पीपल कॉल इट जापनीज कैंडल स्टिक, आई डोंट नो, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट, बट या दिस लाइक अ कैंडल स्टिक जिसको तुम देख के एक मार्केट को प्रेडिक्ट करते हो, राइट. सो हाउ डू यू प्रेडिक्ट द मार्केट? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो जब देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेडिक्टिंग इन द मार्केट. फर्स्ट इज जैसे मान लो एक स्टॉक है, ठीक है, मान लो निफ्टी 50 का एक स्टॉक है. सो उसको दो तरीके से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. उसमें अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स भी होते हैं. तो फर्स्ट जो ट्रेडर होगा वो क्या करेगा? वो होगा स्विंग ट्रेडर. मतलब वो हफ्ते भर का एक महीने का ट्रेडिंग ऐसे लगा देता है बड़ा अमाउंट, एंड वो वेट करता है कि एक हफ्ते बाद मार्केट इस लेवल पे जाएगा. दूसरा टाइप होता है इंट्राडे ट्रेडर, जो कि लोग 2-3 घंटे का ट्रेड लेते हैं, जैसे हम लोग हैं, राइट. वे आर रिटेलर्स, वे आर इंट्राडे ट्रेडर्स. थर्ड जो लोग आते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं. जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं वो ज़्यादा चार्ट्स को नहीं देखते. वो लोग हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस होता है. जैसे जब मार्केट को आप एनालाइज करते हो, दो टाइप्स का होता है. एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, जो हम अभी कर रहे हैं, जो आपको सीखने को मिलेगा. सेकेंड इज़ फंडामेंटल एनालिसिस. फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली जो डेटा है, न्यूज़ है, कंपनी का क्या वैल्यूएशन है, अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, ये सारी चीज़ें उसमें देखनी होती है, राइट. सो वो चीज़ें हम ज़्यादा उसमें नहीं जाते बिकॉज वो बहुत लॉन्ग टर्म का डेटा देता है. हमें शॉर्ट टर्म का डेटा चाहिए, तो उसके लिए हम प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं. तो प्राइस एक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ
टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस मतलब उसके अंडर में आता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ वे वेयर यू कैन अंडरस्टैंड और लर्न दिस चार्ट। ठीक है, इस चार्ट को तुम किस तरीके से सीख सकते हो, समझ रहे हो। तो ये जो चार्ट है इसमें अलग अलग कैंडल्स होते हैं, अलग अलग कैंडल्स के टाइप होते हैं, और उसको जो हिस्ट्री में जो हुआ है, हिस्ट्री का डेटा देख के तुम कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाते हो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, और उस हिसाब से तुम ट्रेडिंग करते हो। ठीक है, बहुत हार्ड है तुरंत डायरेक्टली समझाना, वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन ये चीज़ें लेके जानी पड़ती है। ठीक है, अगर वन बाय वन सीखनी है देन यू हैव टू कम डेली। अगर तुम्हें कुछ पर्सनल सेशन चाहिए देन डीएम मी एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, राइट नाउ मार्केट इज़ गोइंग अप। बहुत सारा मैं अगर कंफ्यूज कर दूंगा तुमको तो तुमको ही प्रॉब्लम होगा, बिकॉज देन मैं बहुत सारी चीज़ें बहुत कम टाइम में नहीं बोल सकता। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हर एक पॉइंट को एक टाइम देना पड़ता है, हर एक चीज़ को एक समय देना पड़ता है, तब जाके तुम पूरा सीखोगे। ठीक है, चलो, what is it really saying right now? It's going up nicely, and how much the profit is? It's almost $88. Okay, $88. Should we book this profit? Hell fucking no. Okay, we're not gonna book this profit. And there is a lot of information that give out for free that people don't value. Okay, so at the same time मैं ज़्यादा free में चीज़ें भी नहीं देता हूँ, but I mostly give everything for free actually. Nice. Just a second, boys. Keep the eye on the trade, okay? नाइस। आई फील लाइक वो जो रिजेक्शन है यहाँ से जो आ रहा है ये बहुत ज़्यादा ही वैलिड है एट दिस पॉइंट। आई वुड से कि एक ग्रेट रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, बट इवेंचुअली मार्केट हैज़ टू टेक आउट दिस रेजिस्टेंस, ओके। एंड ताकि हम TP1 जो है हमारा हिट कर पाए एंड जो भी प्रॉफिट है वो बुक कर पाए। ठीक है, 86 का प्रॉफिट चल रहा है, नो इश्यूज़। ठीक है, हमने आई थिंक एंट्री परफेक्ट जगह पे था, एंट्री में कोई इशू नहीं था, एंट्री वाज प्रीटी मच सॉर्टेड। ठीक है, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए सब किसी को भी। या स्कैल्पिंग इज देयर, मतलब इट्स द सेम थिंग, लाइक व्हाट आई एम डूइंग इज स्कैल्पिंग ओनली, इट्स नॉट अबाउट लाइक स्कैल्पिंग इज जस्ट लाइक इतना ट्रेड कर लिया, छोटा ट्रेड कर लिया, स्कैल्पिंग हो गया। इट्स इंट्राडे ओनली, ओके, इवेंचुअली। Cool, $100 already in. I love this trade. TP1, are you guys excited for the TP1? ठीक है, TP1 हमारा हिट हो जाएगा नेक्स्ट कैंडल में। आई फील अगर इस कैंडल में होता है दैट इज़ गुड, नो इश्यूज, नो स्ट्रेस।
जो लोग देख रहे हैं अभी फटाफट बताओ तुम लोग कहाँ से हो, वेर आर यू फ्रॉम गाइस. ओके, सो आई विल बी एबल टू नो दैट लाइक वेर आर यू, वेर आर द पीपल लाइक फ्रॉम विच एरियाज दे आर वाचिंग मी एंड एवरीथिंग. Nope, it's a real account. It's a XM account. It's not a funded account. I don't need funded accounts. I'm too old to have funded accounts. Telangana. Oh, nice. You saw that that candle is not even moving because there is like it's accumulating right now. अगर तुम 1 minute टाइम फ्रेम पे जाओगे इट इज़ लाइक accumulating. बट या अगर तुम संडे को भी ऐसे मूव्स निकाल सकते हो देन ब्रो लाइक आई मीन दैट्स क्रेजी. Yeah, I've used funded accounts, funded pay, Noah funding, and there are many like funded next and all. Like I've tried. Okay, so it's nice if you're like a beginner. It's nice you can use it. There is no issue. Okay. That rejection was very unnecessary, by the way. We're just hoping that, not hoping. We just like we want market to like take the TP1 as soon as possible because it's very close to the TP1. Okay. अगर तुम देखोगे TP1 मैंने बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली जो प्रीवियस सपोर्ट है राइट, जो यहाँ पे तुमको सपोर्ट देखने को मिल रहा है इसके नीचे मैंने इसलिए रखा है बिकॉज दैट इज़ वेरी लाइक अ इजी पोजीशन टू हिट. यू गेटिंग माई पॉइंट. वो पोजीशन तो इजीली हिट हो जाएगा. द ओनली थिंग इज़ दैट 2 minutes लेफ्ट फॉर दिस कैंडल. 2 minute के अंदर तुमको बस एक अच्छा खासा रिजेक्शन चाहिए एंड डेफिनेटली इट हैज़ टू कम टू दिस लेवल. थोड़ा सपोर्ट लेना पड़ेगा बिकॉज ऑलरेडी इसको पहले भी सपोर्ट लिया है इस लेवल पे अगर तुम देखोगे. ठीक है, इस लेवल को, एंड इट वाज द रेजिस्टेंस एंड नाउ इट इज़ क्रिएटिंग सपोर्ट अराउंड दैट एरिया. ठीक है. हाउ डज इट लुक ऑन 1 minute टाइम फ्रेम. 1 minute टाइम फ्रेम पे आई नो बहुत ज़्यादा वियर्ड लगेगा बट इवेंचुअली वी आर इन गुड पोजिशन राइट नाउ सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. Cool. You see that one of the most important thing about this trade, जब हमने ट्रेड लिया it did not even come in the zone जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस था. तुम समझ रहे हो, बिकॉज इतना परफेक्ट एंट्री था. द रीज़न बिहाइंड दिस एंट्री इट वॉज सो परफेक्ट that it did not even come to the stop loss area. But yeah, I just need the TP1 to get out as soon as possible. We are still in profit, no stress, right? 46 seconds is remaining for this trade. Is it gonna create a head and shoulder? Not really, not head and shoulder. I feel like there is a liquidity sweep to the upside, and market really needs to want or really needs to go to that area and take out some liquidity. That is very important for PTC to go down. Before going down, it has to go up first. You see that rejection? As I just told you, right? You see that rejection? This is what we trade for, and this is what most people cannot do, or most people cannot trade like this. You're getting my point?
जस्ट अ सेकेंड, ओके। जस्ट अ सेकेंड गाइस। या ब्रदर, DM me. ठीक है, इफ यू वांट सपोर्टेशन। Okay, we're back. See, support resistance is very basic. I would suggest you to go and watch this video. Okay? Watch this video and you'll be able to understand the support and resistance. ठीक है? Yes. ठीक है, I was not expecting this move. No stress. We are still here. Okay? On present trade. See, दो चीज़ें तुमको बताऊंगा बहुत इजी तरीके से, ठीक है? यार मुझे ड्राइंग हटानी पड़ेगी बट वो मैं नहीं करना चाहता, बट चल ठीक है, कोई नहीं, मैं तुमको एक बार दिखा देता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से क्रिएट होते हैं और इस लेवल पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन सा है अभी फ़िलहाल, ठीक है? ये वाला जो एरिया है ऊपर का जो यहाँ पे मैंने मार्क किया है, दिस इज द रेजिस्टेंस, ओके। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये आपको रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसको हम रेजिस्टेंस क्यों बोलेंगे आपको ये भी समझना पड़ेगा। ये सपोर्ट पहले था नहीं, ठीक है? ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। ये सपोर्ट कैसे क्रिएट हुआ और ये रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट हुआ? द ओनली थिंग इज़ दैट जब मार्केट इनवैलिडेटेड दिस एरिया, राइट, इट डायरेक्टली वेंट अप। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? इट डायरेक्टली वेंट अप। अगर मैं इस तरीके से दिखाऊँ आपको, इट डायरेक्टली वेंट अप टू दिस लेवल, ठीक है? और यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा नीचे आया एंड देन ऐसे, देन इट केम डाउन, थोड़ा ऊपर गया, केम डाउन, अभी इस लेवल पे है। दिस इज़ अ करंट पोजीशन जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो जो ए वाला एरिया, जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, इसको ब्रेक करके यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, मतलब यहाँ से रिजेक्शन मिला, ठीक है? यहाँ से फिर से नीचे आया, फिर से यहाँ पर आपको दिखेगा यहाँ पे फिर से एक रिजेक्शन मिला इस एरिया पे, 2 रिजेक्शन मिले। देन आई वाज लाइक चल ठीक है, दिस इज़ रेजिस्टेंस जो अच्छा खासा मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन दे रहा है, इट गोना कम डाउन एंड देन अगेन यहाँ से फिर से मार्केट गया, यहाँ पे फिर से आपको एक रिजेक्शन देखने को मिला। आप समझ रहे हो? देन मार्केट नीचे आया, सपोर्ट में बाद में समझाऊंगा, नीचे आया एंड देन फिर से उस लेवल पे गया। थोड़ा यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप आपको देखने को मिलेगा, बट इसका जो बॉडी है, बॉडी तो नीचे ही क्लोज हुआ इस कैंडल का, समझ रहे हो? तो फिर से इस एरिया से मार्केट ने फिर से रिजेक्शन लिया, राइट? तो इतनी बार एक जगह से रिजेक्शन लेने के बाद सेम एरिया पे बार बार जब मार्केट रिजेक्शन लेता है तो हम उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये सपोर्ट क्यों है? सपोर्ट इसीलिए है बिकॉज यहाँ पर 2 बार मार्केट ने आके सेम लेवल पे आके सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर बाउंस किया है। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द सपोर्ट। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? इसे हम सप्लाई और डिमांड भी बोलते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, एंड अगर दूसरी लैंग्वेज में बोला जाए तो हम इसे ऑर्डर ब्लॉक्स भी बोल सकते हैं, राइट? सो देर आर डिफरेंट वेज दैट पीपल ट्रेड और इट गिव्स पीपल गिव्स नेम, समझ गए? तो इस लेवल पे मैं क्या करूँगा, ये वाला लेवल मेरा रेजिस्टेंस हो गया और ये वाला जो मेरा लेवल हो गया ये मेरा एक सपोर्ट हो गया। आप समझ रहे हो? तो इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम यहाँ पे मार्क करते हैं।
सो बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है, जब जहाँ मार्केट रेजिस्टेंस पे जाता है वहाँ से सेल करो, सपोर्ट पे जाता है बाई करो। बट ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें दिक्कत क्या है पता है क्या? सबको ये चीज़ें पता है तो मार्केट अभी उस तरीके से बिहेव नहीं करता है, बिकॉज मार्केट इज़ ऑल एल्गोरिदम, इट इज़ ऑल एल्गोरिदम। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो खुद से सेलिंग बाइंग नहीं करते, इट्स ऑल एल्गोरिदम, राइट? तो उसके अकॉर्डिंगली उनको ऐसे जगह पे ट्रेड लेना पड़ता है जहाँ पर लोग थोड़ा पैनिक करें, लोगों के स्टॉप लॉस हटे। जैसे बेसिकली अभी जैसे एग्जांपल मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊं, यहाँ पर जब हमारा रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है ये वाला लेवल का, ठीक है, ये वाला जब रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ यहाँ पे 2-3 बार माउस मार्केट ने यहाँ पे जाके बाउंस नीचे किया, केम अप। अभी यहाँ पर क्या हुआ देखो, राइट? अगर तुम ध्यान से देखोगे, चलो मैं इस लेवल को सपोर्ट बोलूँगा, राइट? मेरा सपोर्ट कहाँ तक था? मेरा सपोर्ट इस लेवल पे था, राइट? जब यहाँ से बाउंस किया है मार्केट ने, राइट, अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे तुम देखोगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे तुमको मार्केट यहाँ तक जाते हुए दिखेगा। तो यहाँ पर जब मार्केट गया तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लगा डेफिनेटली कि दैट मार्केट इज़ गोना गो अप, बिकॉज ये जो रेजिस्टेंस था हमारा यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, राइट? बट एक्चुअली में हुआ क्या, नेक्स्ट सेम कैंडल में मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दिया। सो जिन जिन लोगों ने यहाँ पे फोमो में, जस्ट बिकॉज यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, जिन जिन लोगों ने यहाँ से बाई किया है, ओके, थोड़ा वहाँ पे उनको मूवमेंट दिखा, बट इवेंचुअली इट केम डाउन एंड यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हंट हो गया। तो ये होता है बेसिक चीज़ें जो मार्केट करता है या लोग इंस्टीट्यूशंस करते हैं जस्ट टू टेक आउट द रिटेल ट्रेडर्स। समझ रहे हो? सो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं जो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक अच्छा खासा रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दैट इज़ नॉट इन आवर फेवर, बट डेफिनेटली मार्केट डायरेक्टली डज नॉट गो अप, इट रिजेक्ट्स, इट कंसोलिडेट एंड देन इट गोज अप। ठीक है, डेविल भाई वेलकम बैक ब्रदर, बट सपोर्ट रेजिस्टेंस डज नॉट वर्क इन गोल्ड बीटीसी, ओनली लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट वर्क्स। नॉट ट्रू, आई वुड नॉट से दैट। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी वर्क करते हैं बट बहुत रेयरली। देर आर अदर कॉन्सेप्ट, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी तुम अगर एसएमसी के साथ बैकिंग करोगे देन इट विल बी इन योर फेवर। ठीक है, ठीक है, ओके। बट डू यू रियली वांट टू गेट इनटू दैट, लाइक देन मैं पूरा आपको सिखाते बैठूंगा यहाँ पर, लाइक कम ऑन डूड। ठीक है, इट इज़ गोइंग अगेंस्ट अस, बट दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। यू आर सीइंग द ऑर्डर ब्लॉक थिंग, छोड़ो। डोंट फॉरगेट द बेसिक्स, मैं इतना बोलूँगा, ठीक है? अगर तुम्हें बेसिक प्राइस एक्शन में ट्रेड मिल रहा है, बेसिक प्राइस एक्शन में तुम पैसे कमा पा रहे हो, डू बेसिक प्राइस एक्शन। यू डोंट हैव टू लाइक गेट इनटू एसएमसी एंड लाइक आईसीटी एंड ऑल, इट्स कम्प्लीटली फाइन नॉट नोइंग एनीथिंग। अगर बेसिक से पैसे कमा रहे हो, पैसे कमाओ, पैसे कमाना इंपॉर्टेंट है, घर पे पैसे आनी चाहिए, समझ रहे हो ना? बस दैट्स इट। आई डोंट केयर व्हाट कॉन्सेप्ट यू आर ट्रेडिंग और दिस एंड दैट, आई डोंट केयर अबाउट ऑल दैट। आई टेल यू व्हाट इज वाटर ब्लॉक ऑल्सो, राइट? जहाँ पे मार्केट हमेशा रिवर्स करता है, राइट? जब रिवर्स करने से पहले जो एक अपोजिट जो कैंडल बनता है उसको जब तुम मार्क करते हैं, दैट इज़ अ ऑर्डर ब्लॉक फॉर यू। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक इज जस्ट बेसिक दैट देर आर लॉट ऑफ रेस्टिंग ऑर्डर पेंडिंग इन दैट एरिया, दैट्स व्हाई दे कॉल इट ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इट डजंट वर्क ऑल द टाइम, इट डजंट वर्क ऑल द टाइम। ब्रो आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। ठीक है, 1 minute लेफ्ट फॉर दिस कैंडल, आई नीड सम सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन तुरंत, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वो रिजेक्शन आ जाएगा। आई वॉन्ट दिस कैंडल टू टर्न इन टू ग्रीन, देन दैट इज गोना बी अ गुड साइन, एंड बिकॉज द ओनली थिंग इज दैट इट इज गोना गो अप डेफिनेटली, राइट? इफ इट डजंट दैट इज completely fine, but the setup is like that, it has to go up. You're getting my point? But the it's very slow. That's my only problem. Baki is everything is all right. तेरा मेरा सपना पूरा हुआ।
not looking nice at all. This candle still has 4 minutes to reject from this area. Let's see. You see, people who are new, right? Finding a concepts and understanding the basics of the market, it's kind of easy, but like having the psychology that will make you a profitable, that is very important. So that comes with experience. The secret is experience. Okay, so वो धीरे धीरे आएगी सारी चीज़ें. And yeah, yeah dude, Devil, why don't you think that like I did all that? I did all that. ठीक है, 2020 से ICD कर रहा हूँ, chill करो, कोई सीन नहीं. I get it, I understand your point. This is your last trade of the. This is my first trade of the day, not last, first. Oh yeah, let me show you the profit also. Like you guys don't wanna like. Let me show you the PNL, the whole 30 days PNL in front of your eyes. All the instruments. Let's fucking go. ठीक है. So अभी ध्यान से देखो. ये चीज लास्ट में क्या बोलती है पता है? लास्ट में हमेशा तुम्हारे प्रॉफिट बोलता है. तुम कितना भी कुछ कर लो, कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट सब हटा दो, अगर तुम्हारे प्रॉफिट्स नहीं आ रहे तो घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को तुमसे. समझ रहे हो? तो एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर तुम्हारे प्रॉफिट्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यू गेटिंग माई पॉइंट? सो तुमको मैं एक बार प्रॉफिट दिखा देता हूँ. ये अकाउंट जो स्टार्ट किया था, ये अकाउंट ये 2000 से स्टार्ट किया था. अभी अकाउंट का साइज़ देख रहे हो तुम, $10,000 इन लेस देन 30 डेज. 25 डेज मैंने ट्रेड किया होगा, 25 डेज. ओके, 25 डेज मैंने ट्रेड किया होगा. Please explain AMD. You want me to explain AMD, like the basic AMD, accumulation, manipulation, distribution that I teach every day? Like, are you really serious about that, bro? I trade on that daily. I teach people that. Okay, I do this. I do this for living. Okay, yeah. No need come and ask me questions, dude. But yeah, whatever. Chalo. I'll tell you the profits. Okay, $500 loss. Cool. 354 profit. Okay, $10 loss. 3,782 profit. One of the best trade. I think I'm gonna make a video on this trade. जो trade मैंने लिया था. What was the date for this trade? 12, right? 18/12, right? उसके बाद फिर से एक 108 का लॉस, 231 का प्रॉफिट. दो लॉसेस यहाँ पर देख रहे हो तुम. यहाँ पर मैंने होल्ड किया था इसको थोड़े टाइम के लिए, देन मैंने कट कर दिया था. ओके, बिकॉज इट्स ऑलवेज अबाउट लाइक होल्डिंग द प्रॉफिट्स एंड कटिंग द लॉसेस. 1500 प्रॉफिट, अगेन 700 प्रॉफिट, 1100 प्रॉफिट, 1900 प्रॉफिट. बैक टू बैक 4 प्रॉफिट्स, और वो भी कितने हज़ारों में. यू गेटिंग माई पॉइंट? ये पूरा दिख रहा है तुमको? ये पूरा, दिस इज़ अ प्रॉफिट. nobody can nobody can come and tell me this and that and जो भी है bro. Like this is, I do this for living. You getting my point? And और नीचे आओगे, यहाँ पे फिर 500 का लॉस है, यहाँ पर 600 का प्रॉफिट, 500 का प्रॉफिट. यहाँ पे थोड़ा ये स्ट्रिक्स 49 इसको मैं कंसिडर नहीं करता. ये 3 प्रॉफिट्स थे हमारे, जो हमारे लर्निंग फेज थे. ठीक है, लॉस थे सॉरी. एंड उसके बाद फिर से 250 का प्रॉफिट, 541 का प्रॉफिट एंड 413 का लॉस. एंड उसके बाद बैक टू बैक 79, 550 एंड 557. ठीक है, अगर तुम इसको पूरा कैलकुलेट करोगे, ठीक है, अगर लॉस और प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करोगे तुमको पता चलेगा इसमें प्रॉफिट कितना है. गॉट इट?
So this is what I do for living. तो क्या हो गया यार? Bro, if you really need to like मतलब do something about it, honestly. If you understand the AMD, no, you'll understand so many things. You don't have to find the long form of it. Like if you know how it works in the market, it's more than enough for you. But yeah, good for you. तेरा मेरा अफसाना पूरा होया न जाने. You see that rejection? That was the rejection that I was waiting for. And I feel like this candle is gonna hit this, but it's gonna take some time. It's gonna take some time. So we need to wait for some time. Okay. Whenever you talk about concepts, whenever you talk about anything, just show me the PNL. Okay, next time. Anyone. Okay, anyone. Just show me the PNL and then talk to me. Cool. Chalo. ठीक है, it's bouncing back. Obviously, definitely, it has to retrace for some time, and I will watch the playlist and meet you in the next live stream. Definitely, brother. We'll see you tomorrow. Tomorrow afternoon will be. Thank you so much. Arey, arey, thank you so much, Devil Bhai. But yeah, so the thing is that like tomorrow also we're gonna have a live stream if we find some good moves in the market. Definitely today I wanted this 15-minute fair value gap to fill out, and then we can play some good as trades, right? Right now it is like kind of manipulating and doing this and that, but it's like we know the way, right? We know where it's gonna go, and we are gonna wait for it. We are definitely gonna wait for it, and yeah. We're back in the profit, so that is not the issue. I dude, I don't feel bad. Chill. I don't feel bad. I don't feel bad. All good, all love. So yeah, it's going in our zone. I told you, right? I told you it is supposed to go to this level. This candle should touch at least this level. Then we can hit the TP in next at least 15 minutes. Why the fuck is this so slow? I know it's Saturday, but like, come on, dude. You gotta have some more energy to it, no? तेरा मेरा अफसाना पूरा हुआ. Nice. Love that bounce. Love that bounce. Let's go. What I told you, at least I needed this one. At least I needed this. You're getting my point? The reason that I said this because of this. I know. I was kidding. Okay, that was a joke. God. But yeah, it has to like bounce quickly now. Okay, it's 11:30. It's 11:30. I'm not gonna wait for more. Okay.
Dude, come on, dude. भाई I will come live around 8 आफ्टरनून में अगर मैं लाइव आता हूँ देन आई विल अपडेट ऑन द टेलीग्राम मेक श्योर यू जॉइन द टेलीग्राम का कम्युनिटी ठीक है आई ऑल्सो शेयर ट्रेड्स देयर सो बी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड कल मैं अगर आता हूँ लाइव देन आई लेट यू नो ऑल मैं बता दूंगा आपको आफ्टरनून में रात में तो फिक्स है बट आफ्टरनून में थोड़ा डाइसी है तो विल लेट यू नो टुमारो आई हैव लाइक अ डिनर प्लान ऑल्सो सो आई माइट गो फॉर दैट Hold on just a second, okay? We are back. Also, don't judge my outfit because like मैं थोड़ा बाहर गया था. So yeah, I'm getting the water.
Nice. Crazy move, nice move. I feel like now there are high chances of we gonna hit the TP1 very soon. Okay, very soon. I'm so much excited for this. What is the profit running right now? Let me just go back and check. 98 dollars, that is the profit running right now, okay, on Saturday night, and that is insane. That is insane. That is insanely crazy, because you do not see something like this on Saturday night. Honestly, I'm telling you, okay, my phone is fucking dead. Come on, dude, how can you fucking do this? Let me just. W trade, nice trade, going pretty nice, moving pretty nice. Okay, this is what we really wanted. When I started this is what I really wanted. Okay, I wanted the TP1 to hit in like next two candles. Okay, I feel like इस candle के बाद तुरंत TP1 hit हो जाएगा. That is not the issue. But the only thing is that you need to understand that when it comes to the TP1 is kind of easy, right? But the most difficult part is TP2. Does market really wants to go this like to this area and take all this liquidity from this area, right? That is very important, and that is what we're gonna see here. The current profit is right now $98. Okay, this is like a current profit going on, and you'll be able to see this very soon. कूल चलो ठीक है. दो चीज़ें एक पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली बात है यहाँ पर. अगर तुम ध्यान से देखोगे तुम्हें ये पता चलेगा कि ये जो लेवल है यहाँ पर डेफिनेटली एक पहले सपोर्ट लिया था, राइट, सॉरी रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, एंड नाउ मार्केट इज़ गोना प्ले आउट दिस वेरी सून. ठीक है. Also there is a fair value gap at this area that I'm kind of worried about, but it's gonna be fine. ठीक है. How much it is right now. I like trading in gold very much. That's nice, brother, that's nice. I trade in gold only, right? That's one of my favorite pair, and it's very expensive, so I like that shirt, right? When the losses are bad and the profits are also like that, right? Losses होते हैं, then profits भी crazy ass होते हैं. I love gold. ठीक है. Okay, cool guys. How much is the profit? I wanted to see. That is like 111. Okay, nice level. TP1, क्या हम इस कैंडल में TP1 hit कर देंगे? What do you guys think? Tell me fast. Are we gonna hit the TP1 on this one, or do we have to wait for another candle? Do we have to wait for another candle or what? Because अगर यहाँ से rejection आता है, then it's gonna be bad. तुम समझ रहे हो? अगर यहाँ से rejection आता है, this is gonna be bad. Because I'll tell you what's gonna happen if यहाँ से अगर rejection आता है, the next move, right? And there is a reason behind it, right? This can be your next move, but the reason behind it, this should not happen because the pending liquidity. Okay? Only the reason is pending liquidity. ठीक है? हो सकता है मैं TP1 पे भी कट कर लूँ. दैट्स अ नाइस प्रॉफिट ऑन सैटरडे नाइट. यू डू नॉट एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दिस. अगर सैटरडे नाइट पे तुम अगर ऐसा प्रॉफिट निकाल रहे हो, वो भी मार्केट जहाँ पे एक्चुअली में मार्केट बंद है, इंस्टीट्यूशन जो लोग सारे कुछ नहीं कर रहे, दैट चिलिंग राइट नाउ एंड वी आर ट्रेडिंग हियर. तुम समझ रहे हो? सो या एवरीबडी इज चिलिंग एंड वी आर हियर फकिंग हसलिंग. ओके. And yeah, $100 not bad. 10,000, almost 9,000 rupees, fine on Saturday night. I would take it. Honestly, I would take it. ठीक है? No issues.
So yeah, I don't know how many points. See it yourself. This is this much, okay. Cool. I feel like ये वाला kind of TP1 hit कर देना चाहिए. Let me see how much profit we're gonna have at TP1. That is 147. Should we go for 149, or should we directly go for 260? What do you guys think? 249, oh sorry, 146 or 260? Let me just do this first. What is a 30-minute or 1 hour chart? It's a 5-minute chart, dude. ठीक है? Okay, nice. Love that. TP1 is about to like crack that shit, dude. 120, 124. Okay, we're very close to the TP1. Let's go. We are so fucking back. We never left, dude. We're always here. तो TP1 ऑफिशियली हिट हो जाएगा इन नेक्स्ट 10 seconds और 15 seconds और 1 minute, आई वुड से. ठीक है. No? Is it holding 120, 124? No stress. We'll wait. आई थिंक 150 seconds बचे. 150 seconds में तो TP1 तो easily hit हो जाना चाहिए. Honestly बता रहा हूँ. ठीक है. We do not need another candle. We do not need another candle. It should have increased. 124. It's stuck, dude. It's stuck on 124. It's stuck on 124. I think the last 1.5 minutes will do something. On Monday I'll go twice a day. ठीक है. Twice a day in the way like morning में भी live stream होगा and then evening में भी live stream होगा. Monday को थोड़ा crazy होगा. I hope Monday को सब crazy तरीके से. एक बार मैं check कर लेता हूँ. Is there anything on Monday? We're good on Monday. ठीक है. No stress. We have CAD news on CAD. Okay. Cool. It's bank holiday it is, dude. It's bank holiday. Monday is bank holiday, I feel. Exactly. I'm waiting for gold too, but I think it's mostly a bank holiday. It's stuck, dude. This candle is literally stuck. You see this? You see this? It's crazy. It's crazy. There are two candles. They're stuck. There are two candles. Okay, there are two candles. Oh, it's reversing from that area. This much I need. This much. That's it. And then I'm leaving. This much I need. Okay, we're going for TP1. Okay, let's go. How do we do this? Just a second. Let me remove the original positions. I feel like I'm gonna take it to TP1. Okay, this is what I'm aiming for. 149. Good number. No issues. I have no issues with $149. $149 on Saturday night. I would take it happily. Okay. ठीक है. Let's come to this.
let's take this to this area. Okay, okay, we're very close, let's go. Let's go. Woof! Bang. ओके यहाँ पर अलग था, यहाँ पे अलग था. शुड ही कट? लेट्स टेक दिस हियर. ठीक है, 140. आई नीड 140. 141. ओके, नॉट बैड. ओके, कूल. फटाफट. वी नीड दिस. TP1 is officially kind of done. यहाँ पे थोड़ा मैंने ऊपर यहाँ पे अलग अलग पोजीशन लगाया मैंने, बट फाइन, नो इश्यूज, राइट. हम यहाँ पे भी कट कर सकते हैं, बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दिस कैंडल टू क्लोज अबाउट दिस एरिया. I want this trade to manually exit. I need manual exit. 130 is not bad. 130 is not. Is it bad, chat? 130 is bad? No, it's not bad, right? Yeah, I don't think so. It's bad. Fuck this shit. Okay, I'm cutting this. Okay. Cool. Let me show you history. $131. That is on Saturday night. Crazy ass moment, and I loved it. You see this back to back profit, back to back profit. This is what we do on live stream. Every trade I take on live stream. Okay, there is nothing offline. There is no trade that I take that is offline. Okay, we took this trade. It is a crazy trade. This is the original position. Okay, I'm still gonna maintain this. मैंने trade हटा दिया, but I'm still gonna maintain this position, and then I know it's gonna go to this area because I'm pretty much confident about it. When I took the trade, I waited market to come down to the 15-minute fair value gap. I think 3 hours, 4 hours I've been just waiting for the position, right? Once it came to that position, I knew that where it's gonna go, and that was my target, and I was fixed about it. I came live, I took this trade. We took $130, $131 home, and that is on Saturday fucking night. I don't mind taking this. Okay, this is me. This was the trade that we took today. It was crazy, it was lovely. The stream was not very much long, but still, and today everybody is like kind of busy, so there were not many people on the stream as well, but that is fine. People are gonna watch later and they're gonna understand so many things. You're getting my point? Okay, thank you so much for watching this stream. People who are here, come tomorrow. I'm gonna stream tomorrow also, but Monday is gonna be crazy. Okay, focus on Monday and it's gonna be crazy. All right, thank you so much for watching this stream, and I hope you do well in your life, and I hope you do well for your family. Best of luck for your life, and have a good night. Bye bye. Peace out.